Alright, so before we start the video, let me inform you guys, ये वाला रिव्यू वीडियो और आगे आने वाले सभी रिव्यूज़ दो वीडियोस में डिवाइडेड होंगे, द गुड साइड एंड द बैड साइड। मेरे रिव्यू वीडियोस यूजुअली काफ़ी लेंथी होते हैं, सो आई हैव कम अप विद दिस सॉल्यूशन ताकि आप लोगों को 20 मिनट का लेंथी वीडियो एक ही बार में ना देखना पड़े। इसके साथ ही प्रोडक्ट का जो गुड साइड और बैड साइड है वो दोनों सेपरेट वीडियोस में होंगे, जिससे कि आप लोगों को भी आसानी होगी evaluate करने, and not to mention the videos will be much shorter in length. So with all that said, let's jump straight into the video. This phone was released just over a couple of months earlier and हो सकता है कि आपने इस फोन के बारे में अभी तक ना सुना हो, बिकॉज इसको उतना हाइप नहीं मिला जितना यूजुअली पोको सीरीज वाले फोन्स को मिलता है। एंड द रीज़न कुड बी दैट इसका जो इनिशियल प्राइस था, आई मीन प्रोडक्ट लॉन्च होते ही वो थोड़ा ज़्यादा था। पोको M4 5G का 464 वेरिएंट जो है वो 16,000 रुपीज़ में आ रहा था, जबकि आप 16,000 रुपीज़ में Redmi Note 10 Pro ले सकते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली द बेटर चॉइस। इट क्रशेस पोको M4 5G इन एवरी एस्पेक्ट। बट अभी जो पोको M4 5G का प्राइस चल रहा है वो है 11,000, and if we consider this new price, then it is a bang for your buck kind of product. So the very first and the major good side of this product is that आप जितना पैसा पे कर रहे हैं आपको in return उससे कई ज़्यादा मिल रहा है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, I'll prove it in the video, just stick to it. Starting off with the design. So the first thing I felt when I held the phone in my hand for the first time was interesting. I got the grey color variant because it goes perfectly with the black camera design, so I like this color combination a lot. The back is made of plastic, the side frames are made of plastic, which is fair. जो back panel है उस पे ये अजीब सा texture है. It has these very thin curved lines which you can actually feel while holding the phone. I do like this texture. It kind of feels satisfying, not cheap and strangely good. और इससे फिंगरप्रिंट स्मजेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, which is another plus point. Side frames are flat and then it gradually curves down as it goes back, so you get that combined boxy and curvy feel in your hand. मतलब comfort plus grip दोनों मिल जाएंगे यहाँ पर. Camera layout is pretty awesome as well. Looks like a mixed breed of OnePlus 10 and Pixel 6. इस टाइप का लेआउट फ्लैगशिप्स में काफ़ी ट्रेंड कर रहा है एट द मोमेंट, सो इट्स गुड टू सी अ लो बजट एंड्रॉइड फोन विद सच अ डिज़ाइन। और ऐसा नहीं लगता कि इसको मतलब ज़बरदस्ती लगाया गया है जस्ट टू इम्प्रूव द एस्थेटिक्स, बट काफ़ी वेल प्लान्ड है एंड काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। इट lines with the edges perfectly, then gradually curves in and looks very elegant as well. This entire portion is made of glass and the two lenses will be popping out of it just a tiny bit. But it does not rock on the surface because horizontally it covers the entire back of the phone and is even on both the sides, so it sits firmly on the surface. Overall, this whole camera thing is quite impressive. I've had people stare at my phone impressed by this camera design. It definitely looks expensive. It is not perfect though. कुछ issues हैं इसको लेके जो आपको negative side वाले वीडियो में देखने मिल जाएगा. Now if we talk about the ports and buttons, well, तो टॉप में आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाएगा और आयर ब्लास्टर भी टॉप में ही है। बॉटम में माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और एक सिंगल स्पीकर है। स्पीकर की बात हम बाद में करेंगे। फ्रंट साइड में नॉच के ऊपर ईयरपीस मिल जाएगा आपको। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे मिल जाएगा एंड ऑन द राइट वी हैव द वॉल्यूम रॉकर्स एंड द पावर बटन which also doubles as the fingerprint scanner. और इस स्कैनर की स्पीड एंड एक्यूरेसी जो है इट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप जब फिंगरप्रिंट सेटअप करते हैं तभी ये आपके फिंगर को 2 बार स्कैन करता है। फर्स्ट टाइम आपके फिंगर का सेंटर पोर्शन स्कैन किया जाएगा एंड द सेकेंड टाइम इट स्कैन्स द एजेस। आपको सिर्फ स्क्रीन ऑन करने के लिए पावर बटन प्रेस करना है और फोन डायरेक्टली अनलॉक हो जाएगा। मतलब जब तक स्क्रीन ऑन होता है तब तक स्कैनर अपना काम कर चुका होगा। एंड द प्लेसमेंट इज ऑल्सो परफेक्ट। लाइक मैंने इससे पहले कभी एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला फ़ोन यूज़ नहीं किया था एंड मुझे इसे अडेप्ट करने में मतलब ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। I just had to go for the scanner randomly and it was almost certain that at least some part of my finger will land on top of it. It's a straight 10 out of 10 for the scanner. Now we are moving on to the display section. The display you're looking at right now is a 6.58 inches 90 Hz Full HD Plus IPS
LCD panel with Gorilla Glass 3 protection, and with 240Hz touch sampling rate, it's very responsive as well. From the front, it looks like a typical budget phone with a little bit of chin, water drop notch and fairly thin side bezels. Most of the budget phones में यही डिज़ाइन देखने मिलता है, so nothing to complain here. इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 83.3% है, which is typical in this price segment, but डिस्प्ले बड़ा होने की वजह से viewing area काफ़ी ज़्यादा मिलता है, so the chin notch and the bezels won't bother you much. Clarity, details and sharpness is good, but इतना बड़ा डिस्प्ले के लिए Full HD Plus रेजोल्यूशन जो है थोड़ा लो हो जाता है. यही सेम रेजोल्यूशन के साथ 6.4 या फिर 6.3 इंचेस वाले डिस्प्ले में आपको ज़्यादा क्लैरिटी और क्रिस्पनेस मिलेगा. Now this is not a deal breaker. The display still looks good and is just sharp and crisp enough to qualify as a good display. It also gets bright enough for broad daylight and low enough for low light surroundings. Direct sunlight में 80 to 100% brightness will do the job with light theme. So generally outdoor usage में कोई problem नहीं होगी. Under extreme light, the colors of the display get intense, like saturation, luminance वगैरह जो है increase हो जाता है to make it easy to see what's on the screen. So ये बात दिमाग में रख लीजिए. पहले मुझे भी डिस्प्ले डिफेक्टिव है लगा था, लेकिन बाद में इस चीज़ का पता चला कि कलर शिफ्ट होता है ब्राइट कंडीशंस में, और वैसे इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ब्राइटनेस में. Entertainment is super fun. Watching videos, movies and gaming experience is great, and even productive work on this display like editing and all वो भी काफ़ी सही है. Huge size, punchy and vibrant colors, good details, different color schemes all together provide an amazing experience. Finally optimized HD videos look really nice with rich colors, good details and a large viewing area with good viewing angles. The angle shift will only cause the brightness to change a little bit, बाकी कलर्स वगैरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता. लेकिन डिस्प्ले से रिलेटेड कुछ माइनर इश्यूज हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा. But for now, let's keep moving. If we talk about the 90Hz refresh rate, if you are switching to this from a 60Hz display, आप instantly difference notice कर सकते हो. The display definitely feels smoother and a bit satisfying to use. And without any hesitation, I can easily say this is the best 90Hz refresh rate display you can get for the money you are paying here. Most of the time it stays at 90Hz. बाकी कुछ apps में जो 90Hz के लिए optimized नहीं होते, वैसे ऐप्स में ऑटोमेटिकली 60Hz पे स्विच हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल यूट्यूब को ले लो. सो कुछ गिने चुने ऐप्स में स्क्रीन 60Hz तक ही लिमिटेड होगा डिपेंडिंग ऑन द ऐप यू आर यूजिंग, बट मोस्ट ऑफ द ऐप में आपको 90Hz रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, सो नथिंग टू वरी. इट कैन ऑल्सो अडैप्ट टू द कंटेंट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड स्विच बिटवीन 30, 60 एंड 90 FPS, making it a semi-adaptive refresh rate display or something. I don't know, because ये adapt तो करता है लेकिन limited है, so I don't know what to make of it. Now software and user experience, both of these are extremely important for a phone to make it worth buying, and this phone checks both the boxes. It comes with MIUI 13 based on Android 12 directly out of the box, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. You can experience all the new features of Android 12 and MIUI 13 right out of the box, like floating windows, which can be very handy at times. There is this sidebar which lets you open apps in Windows without having to close down or minimize your current application. Android 12 gestures make one-hand usage very convenient. Even though it has a massive display, majority of the actions can be done just in the bottom half of the screen, except for pulling down notification panel and similar tasks. होम स्क्रीन से तो ये भी काम बॉटम हाफ से ही हो जाता है. We also have new widget styles, new live wallpapers, new ringtones and all that good stuff, along with some improved optimizations for better performance and battery life, जिसके बारे में हम परफॉर्मेंस सेक्शन में डिस्कस करेंगे. वैसे मैंने अपने लाइफ में बहुत ही कम MIUI OS यूज़ किया है. आप मेरा कोई भी स्मार्टफोन वाला वीडियो उठाकर देख सकते हैं, आपको सब में कस्टम OS ही देखने मिलेगा. I did not like it from the start, so hardly ever been on it for more than a week. But now I am quite surprised at how good it has become. It has so many features. UI is fairly smooth and looks good with good animations, like pulling down the notification panel, opening of quick actions panel of apps, expanding the volume panel. Even uninstalling an application looks very satisfying. So there are these so many animations for the simplest of things, जो अगर नहीं भी होते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके होने से user experience definitely enhance हो जाता है. I like the settings app too, with nice colorful icons and all. Customization has been improved. Status bar customizable है.
कंट्रोल सेंटर स्टाइल में भी 2 ऑप्शंस हैं। इवन द स्टॉक लॉन्चर हैज सम डिसेंट कस्टमाइजिंग ऑप्शंस टू एंजॉय नाउ, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी लॉन्चर से कंपेयर करें तो स्टॉक लॉन्चर काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर है यहाँ पे। सो इफ आर नॉट इनटू एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन, आपको थर्ड पार्टी लॉन्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्टॉक लॉन्चर से आपका काम चल जाएगा। The UI is genuinely neat and tidy. Dialer and messaging apps are now Google apps, which is a must for me. Unwanted bloatware ना के बराबर थे, except for some apps like MI Credit, MI Pay, MI Remote, Google News and Podcast. Now I'm not saying ये apps बेकार हैं, लेकिन ये apps हर कोई यूज़ नहीं करता, so जिनको यूज़ करना होगा वो लोग प्ले स्टोर से ले सकते हैं, so इनको पहले से इंस्टॉल करके देने की ज़रूरत नहीं है। This is what I feel. ये सारे ऐप्स तो फिर भी प्रोडक्टिव ऐप्स हैं, लेकिन इसमें मौज ऐप भी प्री इंस्टॉल था। लाइक इसको प्री इंस्टॉल करके देने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लाइक ये लोग ऐसे ऐप पहले से डाल के दे रहे हैं कि लोगों का मतलब फ़ोन खोलते टाइम वेस्ट होना चालू हो जाए। Stop it. Now coming back to the topic, this phone also supports double tap on the home screen to turn off the display, which is a must have feature for me. And आपको double tap to wake भी मिल जाता है, which is always good to have. पावर बटन पे थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है। It also has a raise to wake feature, which automatically turns on the screen as soon as you pick your device up or take it out of your pocket. And I really like this feature, it's very convenient. Pick your phone up, touch the fingerprint sensor and your phone is unlocked. There are gesture shortcuts too for some quick actions like turning on the torch or taking a screenshot. You can also set certain custom gestures for your fingerprint scanner and choose any one action from the list, which is actually a good addition, but मैं इसको use नहीं करता because ये कभी भी अपने आप trigger हो जाता है, which is a bit annoying, so I keep this as it is. Overall, I like this software experience, even though it is not as smooth and stable as stock Android, but switching from a custom ROM straight to MIUI OS and then getting impressed by it is actually a great compliment. Now we are getting into some serious talk, the performance section. So this Poco M4 5G has the MediaTek Dimensity 700 7nm octa-core chip clocked at 2.2 GHz with 4GB DDR4 RAM clocked at 2133 MHz, Mali G57 MC2 GPU and 64GB UFS 2.2 storage. So on paper this phone is way ahead of its competitors. मैं पहली बार कोई MediaTek chipset वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ and so far it has lived up to my expectations. The performance is generally pretty good and the 90Hz refresh rate makes it even better. Be it browsing, streaming, scrolling through social media apps, attending or making a phone call, switching between multiple apps, using 2 apps at the same time, everything was decent. When you're inside an application, you will get the peak performance and fluidity. MIUI 13 में कुछ नए features भी introduce किए गए हैं to improve performance and efficiency. And one of them is centralized computing. And the way this feature works is अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो CPU अपना most of the power उसी ऐप पर spend करेगा, limiting the power to other applications that are running in the background. और इसे आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है because CPU primarily उसी ऐप पर फोकस कर रहा होता है. So you literally get the highest performance possible. The next one is automized memory feature, which learns how you use your applications and उसके according applications को memory distribute किया जाता है, which improves multitasking and switching between apps becomes faster. This is what it says on paper, but in reality this is just half the truth. कभी कभार like multitasking काफ़ी सही होता है, 3-4 apps easily use किए जा सकते हैं simultaneously without running out of memory, लेकिन कभी कभार 2 apps भी memory में नहीं रह पाते. So ये जब तक अच्छा चल रहा है तब तक मल्टीटास्किंग काफ़ी सही होता है, रैम मैनेजमेंट में भी कोई इशू नहीं आता, एप्स क्विकली स्विच किए जा सकते हैं, मल्टीपल एप्स मेमोरी में भी रहते हैं. But once it slows down, the OS gets all heavy and the phone starts to struggle to keep apps in memory while multitasking. I don't know what exactly the core issue is, but more breakdown will be in the negative side video. वैसे ये जो 2 फीचर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग एंड ऑटोमाइज्ड मेमोरी, ये दोनों फीचर गेमिंग के लिए काफ़ी सही हैं बिकॉज योर गेम गेट्स फुल अटेंशन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड CPU पावर व्हेन इट्स एक्चुअली रनिंग. At first I was a bit skeptical about this processor, but gaming performance in general is pretty good, not gonna lie. COD Mobile, PUBG Mobile, eFootball 22, Asphalt 9, most of the heavy games ran with no issues at all. No lag, no frame drops, no heating issues, nothing.
ये फुटबॉल अगर 60 FPS एंड हाई ग्राफिक्स पे खेलते हैं तो फ़ोन पे काफ़ी स्ट्रेस गिरता है एंड आफ्टर अ वाइल फ़ोन का टेम्परेचर हाई हो जाता है एंड यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस फ्रेम ड्रॉप्स। और ये मोस्ट ऑफ द बजट फोन्स में आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा, बट दिस फोन हैड नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, नो फ्रेम ड्रॉप्स और टेम्परेचर में भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। Now this shows the processor here is well optimized to handle stress for longer durations without degrading performance. मैं इसका सेपरेट गेमिंग रिव्यू भी करने का सोच रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स दैट आई विल गेट ऑन दिस वीडियो, बट आई वुड लाइक टू से दिस फोन कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द गेम्स एंड पबजी वगैरह आराम से 60 FPS पे खेला जा सकता है अनलॉक करके। सो 11,000 में इससे अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इट इज़ इवन बेटर देन Redmi Note 7 Pro which has a Snapdragon 675 प्रोसेसर। और मैं सिर्फ गेमिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ों में Snapdragon 675 बेटर है Dimensity 700 से। Anyway, so we are arriving towards the end and it's time to discuss the battery. So this phone packs a 5000 mAh battery inside with 18 watts fast charging support and a 22.5 watts charging brick. And to be honest, I'm very satisfied with the battery life here. मेरा फ़ोन यूजेज डेली बेसिस पे कुछ ऐसा होता है। डिस्प्ले हमेशा 90 हर्ट्ज पर, मोबाइल डेटा वाईफाई और ब्लूटूथ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन और कनेक्टेड रहते हैं। थोड़ा बहुत गेम खेल लेता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पस, बाकी थोड़ा सर्फिंग और ब्राउजिंग, थोड़ा टाइम सोशल मीडिया ऐप्स पर, थोड़ा टाइम यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीम कर लेता हूँ। बाकी मेरा प्रोडक्टिव वर्क, स्क्रिप्ट लिखना, रिसर्च करना एंड एटलीस्ट 2.5 to 3 hours ऑफ म्यूजिक प्लेबैक ऑन रेगुलर बेसिस। और इतना सब कुछ करके भी मेरा आराम से एक दिन निकल जाता है। रफली 7.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ऑल द टाइम विच इज़ नॉट कॉमन एट ऑल। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं डे 1 से इस फ़ोन को 90 हर्ट्ज पर ही यूज़ कर रहा हूँ। लाइक 60 हर्ट्ज काफ़ी रेयरली यूज़ किया रहूँगा बिकॉज मुझे बैटरी की कमी कभी महसूस ही नहीं हुई। लाइक मैंने अगर आज सुबह फ़ोन को फुल चार्ज किया है तो मुझे डायरेक्टली फिर से अगले दिन सुबह फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा। कभी कभार तो 2 दिन भी निकल जाता है अगर यूजेज थोड़ा लाइट रहा तो। सो दिस ऑल्सो मीन्स 60 हर्ट्ज के साथ आपको 8 आवर्स से ज़्यादा का बैकअप मिल सकता है ईजिली, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सो आई नेवर वरी अबाउट बैटरी लाइफ। लाइक मुझे अगर गेम खेलना होगा तो मैं सीधा खेल लेता हूँ। आई नेवर थिंक ऑफ बैटरी ड्रेन बिकॉज आई नो हाउ गुड इट इज़। ऑन टॉप ऑफ दिस इसका स्टैंड बाय टाइम भी काफ़ी सही है। लाइक समझो 3 घंटे में आपका हार्डली 2% चार्ज जाएगा, वो भी वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टेड रख के, विच इज़ एक्चुअली इम्प्रेसिव। और ये सिर्फ 5000 mAh बैटरी की वजह से नहीं होगा, शायद आई थिंक इसमें SoC और OS का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये दोनों एफिशिएंसी में हेल्प नहीं करते तो इसका इतना अच्छा बैकअप नहीं होता शायद। इसके साथ ही MIUI का बैटरी सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सही है। यहाँ पे बैटरी यूजेज का पूरा डिटेल्ड इन्फो मिल जाता है, कितना यूजेज टाइम बाकी है वो पता चल जाएगा। और जो ऐप्स विदाउट एनी रीज़न आपका बैटरी कंज्यूम करते हैं वैसे ऐप्स और कुछ सेटिंग्स यहाँ पे लिस्टेड होंगे जिन्हें मॉडिफाई करके आप बैटरी लाइफ अच्छा रख सकते हो। इवन दो इनिशियली जितना बैकअप मिलता था मुझे अभी उतना नहीं मिलता, देयर इज़ अ स्लाइट ड्रॉप इन बैकअप बिकॉज ऑफ ऑल द न्यू ऐप्स दैट आई हैव इंस्टॉल्ड, लेकिन फिर भी ज़्यादा नोटिस करने जैसा कुछ है नहीं। इट स्टिल प्रोवाइड्स एक्सेलेंट बैकअप टाइम। बाकी चार्जिंग स्पीड थोड़ा स्लो लगा मुझे। इट टेक्स अराउंड 1 hour 45 minutes टू फुली चार्ज फ्रॉम 0 to 100 विच इज़ डेफिनेटली नॉट अप टू टुडे स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसको बार बार चार्ज भी नहीं करना पड़ता। इट हैज़ अ मैसिव बैटरी इनसाइड, सो इट्स अ लिटिल गिव एंड टेक हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैमरा, this phone has a 50 megapixel main camera with f1.8 aperture and a 2 megapixel depth sensor with f2.4 aperture। अभी अगर मैं इस मेन कैमरा का क्वालिटी एक्सप्लेन करूँ तो यू समझ लो, यू पॉइंट योर कैमरा, यू टेक अ पिक्चर, यू लुक एट इट एंड you'll be like, not bad, that's all there is। You get vibrant images with enough brightness, details and crispness। It is just a basic camera, कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने लायक है नहीं। डे टाइम में अच्छे खासे पिक्चर्स मिल जाएंगे लाइक सोशल मीडिया पे अपलोड करने लायक, नाइट टाइम और लो लाइट में भी ठीक ठाक पिक्चर्स मिल जाते हैं। इट ऑल्सो कम्स विथ पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा HD मोड, नाइट मोड, HDR मोड and pro mode for manual controls। So there are a few options to play around and explore here। If we talk about the 8 megapixel front camera, well तो ये मुझे थोड़ा better लगा। थोड़ा बहुत post processing होता है which make the images a little soft to look good and it's not too much, so I'll take this। Most of the time
आपको satisfactory pictures मिल जाएंगे with good colors, sharpness and nice details. It also has portrait mode support for front camera, which is again decent. You do get blurred background, but it is on the rough side. Like edge detection वगैरह उतना accurate नहीं है. And just like the rear camera, this one also can record 1080p videos at 30 fps, which is good enough for the front camera. लेकिन rear के लिए 1080p 60 fps होना चाहिए था. So overall it is a good basic camera. Like इस प्राइस रेंज में आप इससे ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं सकते. It is just good enough for the money you are paying. लेकिन अगर इस फ़ोन के बाकी एस्पेक्ट से कंपेयर करूँ तो कैमरा को मैं सबसे बॉटम में रखूँगा. By the way, this phone has full camera to API support, which means इसमें Google कैमरा यूज़ किया जा सकता है without any issue. And we all know how good Gcam is when it comes to software processing, so it is highly recommended if you want to improve the camera quality. But overall 11,000 के हिसाब से कैमरा ओके है कहूँगा मैं. और मैंने अभी तक इस डेप्थ सेंसर के बारे में बात नहीं किया है बिकॉज इसका कुछ पॉजिटिव साइड है नहीं एंड इनफैक्ट इसका कुछ नेगेटिव साइड भी नहीं है. दिस लेंस जस्ट फिजिकली एग्जिस्ट, दैट्स ऑल. वी विल टॉक अबाउट दिस मोर इन द अपकमिंग वीडियो, डोंट वरी. Now we are moving on to the final miscellaneous section. The earpiece of this phone is very good. It's really loud, crisp and very clear. Like मुझे इससे कभी कुछ issue नहीं हुआ है and same goes for the microphone too. Now speaker की बात करें तो loudness और quality काफ़ी सही है. सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी सॉन्ग्स वगैरह तो ऑब्वियसली एंजॉय कर सकते हो, प्लस मूवीज वगैरह भी वॉचेबल हैं विदाउट ईयरफोन्स. और गेमिंग के टाइम स्पीकर ब्लॉक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन हाउ यू होल्ड द फोन, सो गुड लक विद दैट. वाइब्रेशन मोटर भी अच्छा लगा मुझे. द फीडबैक इज really good and you also get to adjust the intensity of vibration from light to strong, but medium is the sweet spot for me. This phone also supports face unlocking, which is a nice addition and it works really well. Like it even worked when there was hardly any light around. Like मैं अगर पूरा डार्क रूम में पीसी के सामने बैठा रहूं और मॉनिटर का जो लाइट गिरता है फेस पर, सिर्फ उतने लाइट से भी ये फेस अनलॉक काम करता है, which is quite impressive. So final conclusion, इस फ़ोन में ऐसे फीचर्स हैं जो इस प्राइस सेगमेंट में मोस्टली नहीं होते. डिज़ाइन के लिए भी यही कहूँगा मैं, इतना अच्छा डिज़ाइन मिलना मुश्किल है. परफॉर्मेंस काफ़ी सही है. बैटरी लाइफ इज़ अमेजिंग. हैज़ अ गुड डिस्प्ले विच इज़ ह्यूज इन साइज. सॉफ्टवेयर एंड यूज़र एक्सपीरियंस डिसेंट है और कैमरा भी ओके है. एंड द प्राइस आई पेड फॉर ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट 11,000 rupees, which is one hell of a deal. So the choice will be obviously yours. So that's all for the good side of this phone. Keep an eye for the negative side video which I will be posting in a couple of days. और इस फ़ोन में एक मेजर इशू है जो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर कर सकता है और मे बी शायद कुछ लोगों के लिए उतना मैटर नहीं करेगा ये इशू. It depends on which category you fall into. Time to put an end to this video. If you got any doubts, comment कर दो. I will respond, and if you enjoyed the video, drop a like and share your feedback. It will keep me motivated to make new videos. And if this is your first time here, hit that subscribe button on your way out. Thanks for watching. I'll catch you guys in the next one.